Welcome back. This time, let's talk about expressions. What's an expression? ये मैथ में आपने अपनी क्लास में बहुत सारी देखी होंगी. Expression basically is a combination of values and operators. मिसाल के तौर पे 1 plus 1 is a combination of two values, 1 and 1, and also one operator called plus. So 1 plus 1 is an expression. Similarly, 3 multiplied by 4 is an expression. 1 multiplied by 3 minus 4 divided by 5 is also an expression. दूसरी बात expressions के बारे में कि expressions they evaluate to a single value. Evaluate का मतलब है कि they calculate, when basically you simplify, you get a single value back. So there are a few types of expressions. One is the arithmetic expression, which involves the numbers and arithmetic operators like plus, minus, and multiply, divide, etc. दूसरी टाइप की expressions Python के अंदर, those are called the call expressions. Call expressions हम कुछ देख चुके हैं. एक तो हमने length function देखा था कुछ देर पहले. दूसरी expressions आपने देखी होंगी like sine, cos, tan, abs, floor, ceiling, etc. So ये सब बेसिकली फंक्शंस हैं जिनके अंदर आप एक वैल्यू पास करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं. अगर वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, जिस तरह के प्रिंट है हमारे पास पाइथन में, दैट इज नॉट अ कॉल एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन विल ऑलवेज गिव यू अ सिंगल वैल्यू एट द एंड. So arithmetic expressions involve numbers and operators. Call expressions, they involve functions and maybe numbers which they simplify too. Then we have something called a Boolean expression. Boolean expression is made up of things which evaluate to either true or false, which is called a Boolean value. Chothi type की expression, that's a string expression. Basically, that's an operation on strings and the final result is a single string, single value. That's important. So first, let's talk about the arithmetic expressions and let's see what the code looks like. Like before, we have our interpreter open. अगर आपको interpreter open करना है तो आप Visual Studio Code रन करें, टर्मिनल पे जाएं, वहां पे आप करें न्यू टर्मिनल and then you type Python and press enter. और हमने इस इंटरप्रेटर की विंडो को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके ऊपर लेके गए हैं, that's why you see this. So यहाँ पे आपकी इंटरैक्टिव मोड खुल चुका है और इसके अंदर it's waiting for your commands. Let me delete this new terminal window because we are already using one. So अगर आपने इसको refresh करना है तो just press Ctrl L and it will refresh delete the previous messages. यहाँ पे if you type 25, that's an value. This is primarily an integer value. Now you can add two values together. One is an integer. You can add a float value to it. Float value basically आपकी it's a decimal value. Floating point number is an alternative name to a decimal number. So you can add two numbers together using this plus operator and the value is going to be 25.5. So यहाँ पे this was an expression which evaluated to a single value which is 25.5. Now you can write other complex expressions such as 2 plus 3 multiplied by brackets 8 divided by 2 minus 1 की पावर. अगर आपने किसी चीज को रेज टू पावर करना है तो पाइथन में इसका स्पेशल सिंटैक्स है, दैट इज डिनोट बाय डबल स्टार. सिंगल स्टार इज मल्टीप्लिकेशन. व्हेन यू डू डबल स्टार इट मींस कि यू आर रेजिंग इट टू द पावर 2 minus 3.5. So ये एक लंबी चौड़ी सी खौफनाक सी एक्सप्रेशन आपको नजर आ रही है. Now when we press enter, this expression हमने जिस तरह की पहले बात की थी should evaluate to a single value and the single value is 25.5. यहाँ पे आपको पता है कि जो मैथ क्लास में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्रैकेट्स की होती है, parentheses, ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की होती है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस प्लस माइनस की होती है. सो इसी ऑर्डर में पाइथन भी अपनी एक्सप्रेशंस को वैल्यूएट करता है. नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस विंडो बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एल
यहाँ पे अगर हम करें द वैल्यू ऑफ पाई, तो इट सेज नॉट फाउंड बिकॉज आपने इस लेबल को कहीं बाइंड नहीं किया, बट दिस इज अवेलेबल इन द पाइथन इटसेल्फ. सो हमें ये पाई की वैल्यू यूज करने के लिए व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, वी हैव टू डू दैट. अब इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू इंपोर्ट द वैल्यू ऑफ पाई फ्रॉम द मैथ पैकेज. और अगर अब हम पाई की वैल्यू देखना चाहें तो आप देखेंगे कि ये काफी प्रिसाइज किस्म की वैल्यूज ने आपको दिखाई है with these number of decimal places here. Fine. What about sine? If we do sine pi by 2, तो आप देखेंगे अब कहेगा sine is not found. अब sine को import करने के लिए we need to do from math import sine, and then we will be able to use sine pi by 2. अगर अब हमने cos यूज करने हैं तो फिर हमें दोबारा करना पड़ेगा import cos, या फिर import log, या फिर import power and so on. तो एक एक import करने के बजाय what we do is we say from math import star. So math library में जितने भी functions हैं आप सबके सबको import कर दो. So when you do that, it's going to import everything, and then you will be able to use those directly inside your expressions. We can write a complex expression involving functions. So square root, sqrt for square root, and 5 raised to power of 2, which we know that it's 25 basically, multiplied by log base 10 100, and that's going to be 2. Log 100 is 2, log 1000 is 3, log 10,000 is 4, and so on, plus 2 raised to power 4. So basically आप इसको 2 आप ये भी कर सकते हैं, इसको 2 डबल स्टार 4 या फिर 2 power 4, same thing. Actually internally this 2 power 4 is evaluated using this call expression power 2,4 minus sine pi by 2. So जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो that is 25. So basically what's happening over here is these call expressions, इनके अंदर पैरामीटर के अंदर कुछ वैल्यूज आ रही हैं, जिस तरह कि आपने अपनी मैथ की क्लास में देखा होगा कि आप फंक्शंस के अंदर वैल्यूज देते हैं और फिर दोस फंक्शंस गिव यू सम वैल्यू बैक. कुछ फंक्शंस एक पैरामीटर लेते हैं, कुछ फंक्शंस दो पैरामीटर लेते हैं. अब यहाँ पे स्क्वायर रूट एक वैल्यू ले रहा है, एंड दिस इज नॉट जस्ट अ वैल्यू, इट्स नॉट स्क्वायर रूट 25, इट्स बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन. तो ये एक्सप्रेशन जब तक इवेल्युएट नहीं होगी टू अ सिंगल वैल्यू, तो वो सिंगल वैल्यूज के पैरामीटर में नहीं जाएगी. In order to evaluate this call expression, you must evaluate the expression inside its parameter, and then it will give you the answer. And then you have log 100. यहाँ पे this is a simple value, as it is चली जाएगी अंदर function में, it gives you a value back. And then we have sine pi by 2. यहाँ पे pi is bound to value, वो value पहले retrieve होगी, and then that will be divided by 2. This expression will result in a single value, और फिर वो single value जाएगी as a parameter inside sine, and then that call expression will return another single value back. When you have that, this square root will be sqrt, and then this expression will be resolved to 25, and then this log 100 is straightforward 2. This power 2,4, we know that this is going to be 16. And this sine pi, first it has to resolve the expression in its parameters, which is pi by 2. The pi by 2, अगर आप पहले retrieve करें pi 3.1415 and so on, divide by 2, and then this expression will be resolved to the number 1.57 approximately, and then this call expression will execute and it's going to give you 1 back. अब आपके पास जो final expression यहाँ पे आ गई है, that's going to be 16. That's going to be this call expression will also run, and the square root is going to be 5. So जो final expression आपके पास
just before evaluating to a single value, आपके पास I है, that is going to be 5 star 2 plus 16 minus 1, and that value is 25. So basically इस वीडियो में हमने देखा था कॉल एक्सप्रेशंस और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं. अगली दफ़ा हम देखेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशंस पाइथन में कैसे काम करती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है.